Saji Mathews, or I will request Saji to introduce, and before that, welcome to Ambesh Tiwari. Thank you, Ambesh. Hello, hi. So my name is Saji Mathews, as Ambesh said. मैं फिलहाल अभी मैं Bangalore based हूँ. One of the things that I have done all these years is soaked in a lot of experiences as I went along. So the journey has been good. The last good 25 years I've been at it, advertising, marketing, and now I'm doing consultancy. So this has been my journey. But of course, a lot of things have happened in between in terms of experiences, travel, meeting new people, knowing more about industries, the way the market works and stuff like that. So ये एक तरह का एक well-rounded या तो all-rounded experiences जो मिला है मुझे 25 साल में. I think this is just helping me to discover more and more things, newer and newer things as I go along. मतलब अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे हिसाब से तो. And life is a journey, and I'm just kind of enjoying this. Okay, so मैं short में बताता हूँ. He is branding and communication strategist, और उनके पास 25 years का experience है. And world के जो best companies होते हैं उन्होंने उस पे काम किया हुआ है. My question start with, आप law में जाना चाहते थे और आप आज branding में हो. ये transition कहाँ से हुआ? So the long and short answer of that is I wanted to be a lawyer, और lawyer में specifically मुझे specialize करना था copyright and patent में. तो opportunities were very few in the city that I grew up. तो only place was Delhi. दिल्ली तब तो बहुत दूर हुआ करता था मेरे शहर से. तो then and I so basically that is where it was. And I had a mentor, an uncle of mine was my mentor, who's been a director in many companies. और वो मुझे कहने लगे कि क्या what is your plans, and and he's seen me, मतलब बचपन से मुझे देख रहे हैं. So he asked me whether I was interested in advertising or marketing, and I did say yes. And then he started kind of sharing some information with me. And उसी टाइम पे था कि एक उस टाइम पे मुद्रा कम्युनिकेशन जो एजेंसी है जो अहमदाबाद से फाउंड हुई थी, और इट्स वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज नाउ. तो वो लेट 80s अर्ली 90s में वो फाउंड हुई थी, और वो एजेंसी दे वर लुकिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज. तो उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1992 93. So then I thought maybe this is the best opportunity for me to get into advertising, and of course it was never planned, but it just happened. And of course with a little push from जो मेरे uncle थे वो मुझे mentor कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है. So then I joined them and I got selected in that mentorship program for 1 year, and then that's how I got into advertising. तो मेरा कहने का मतलब है कि I didn't really plan to be in advertising, so that's why we keep on saying that I'm an accidental advertising person. Accidental advertising. Nice line actually. So that is मतलब ये this was how I started in advertising. Yeah. First start करते हैं कि आपने डीवीवी मुद्रा आपने छोड़ा और आप नेक्स्ट करें, ठीक है. तो why you left? It's not like अगर आप शेयर करना चाहें तो. Sure. So in my journey, in my career, एक चीज मैंने ये सीखा है कि don't keep everything fixed. मतलब keep yourself very flexible. कहने का मतलब है कि आप open रहो. You never know where the opportunity is going to come from, and therefore it is not hard and fast. मतलब ये कहते हैं ना कि उसको you don't write it on stone and etch it on stone कि मैं यही करूँगा. तो ये this has been my philosophy of my life, professionally as well as others, saying there is nothing permanent in this world. So keep yourself open to anything that comes to you. You never know where it will take you. So matlab, this has been my philosophy, and that is how I've kind of gone one after the other, and I have never really looked at it so seriously in terms of saying अच्छा यहाँ पे 3 साल और निकालते हैं तो ये next level पे जाएंगे, फिर इसको ये करेंगे. No, nothing like that, because
I've seen that opportunities come, they come only once to you, and you decide what you want to do with it. मतलब आप क्या करोगे वो opportunity को लेके, अगर नहीं करोगे तो क्या हो सकता है और करोगे तो क्या हो सकता है. So normally I don't overanalyze things. Said you jump into it and then you see where it takes you, and so far अब तक तो it's been very good in the last 25 years that I've been in this business, that I have taken up anything that came to me, and I have gone places. I've gone to different parts of the world. I've traveled almost all over the world, including in India. I've done some fantastic projects with my clients, some interesting work. So there are some, if I had kept myself closed in saying, no, I'm very focused on my career, I'm going to do only this and not this, then probably I would not have got इस तरह का जो exposure है या इस तरह का जो experience है. So that is something that I would not have got. So coming back to the question is कि एक company में आप जैसे you're doing very well and आपका comfort zone एकदम सही है वहाँ पे, तो मतलब there is no reason for you to leave that company, right? So but for me it was like, so when you are comfortable means there is nothing more to do there. So and then when something comes up, you're not actively looking, मतलब आप देख नहीं रहे हो कि और कुछ आए और हम jump करें, but you're just making sure that you keeping your eyes and ears open कि ये कहाँ तक ले जा सकता है आपको. And then all along these opportunities came of me quitting company, then moving on to something else. और यहाँ तक कि when I got this offer to start a company in Africa, तो ऐसा था कि the person who called me up and discussed with me about कि ये opportunity है, तो यहाँ तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि country exactly position कहाँ है अफ्रीका में और क्या है. But I before that यही मैंने कहा कि ठीक है चलो, I mean it's an experience, let's just soak it in. I mean as you can, and obviously there's an age and time that you can take the risk. So I just took that, or it just took me places, and that 2 years or 3 years that I was in Africa, मतलब ये एक experience जो था, it is just beyond your professional experience, you know, in terms of meeting new people, knowing उनके जो culture हैं, उनका जो lifestyle है, and और ये होता है कि आप जैसे इंडिया के बाहर होते हो तो suddenly comparison सा हो जाता है कि आपका जो culture है वो कितना different है, और the new culture is so different. So there's always this thing about how do I bring closer to each other, you know, मतलब ये, so this philosophy only comes when you're open to everything that comes to you, everything that is thrown to you. So be positive, और ये दरअसल it just helps you to, you know, progress and, you know, kind of move ahead in life. So this probably is the driving philosophy, where every time कुछ opportunity आई तो I just jumped into it and I looked at it, then moved from there, you know. So this has been my journey. So pretty fluid, pretty open, always positive कि if things don't work out, something else will work out. तो मतलब ये इस तरह के I never got stuck into one saying, no, oh my God, what happens, मतलब इसके बाद ये नहीं चला तो फिर मैं क्या करूँ. I've never given a thought. Saying get into it, experience it, doesn't work, move in, do something else, and just keep on moving, basically. This is basically different from the I mean the principle of stability from the society. Actually society बोलता है कि जाओ कहीं जॉब करो और जाके वहाँ स्टेबल हो जाओ कि लाइफ टाइम वहीं कंप्लीट हो जाए. And correct. You are just opposite to principle of stability, right? Correct. So both my parents were government servants थे दोनों. तो उनकी तो यही इच्छा थी कि मैं भी एक कोई गवर्नमेंट सर्विस ले लूं, या you know, and be stable and steady. In fact on their insistence मैंने काफी entrance exam भी लिखी थी, and I cleared some of the exams, and I got even a government job. But ऐसा था कि उस टाइम पे I was already working in the agency. So in fact somebody came home to deliver the, वो कहते हैं ना, government order कि you have to join this place and all. लेकिन I decided that I stayed out of home that day, and you know, and luckily my parents never forced me. Of course they had this thing कि अच्छा ये government job है तो steady होगा, you know, and you know, always if you are a government employee, you always want your children also to be there because they feel कि ये secure job है and you are, you know, your life is taken care of. मतलब उनका भी यही इच्छा तो थी उनकी भी,
but then obviously they were not forcing on me. So that was one positive thing about them as well. So they didn't force me to do it. They said, look, this has come, it's good for you. They advised me, but ultimately responsibility or the decision making is yours. So मैंने यही decide किया कि no, I'm not cut out for a government job. So I would want to go explore, try and do, and so far life has been very good. So मतलब it has worked out good. So I can always talk about it. Okay, so I will talk like आपका जो native है, you are from Kerala, right? Yes. Now you are in Bangalore. Yes. And your Hindi is too fluent. I'm not telling that Kerala के लोगों को हिंदी अच्छा नहीं होता है, but I mean they have tough, like हमारा English अगर हमारे लिए tough होता है तो for them Hindi is tough. So how come, like क्या ये working experience था या फिर how it is with that? Yeah, so I grew up मतलब I grew up in मैं जो कहा था कि अहमदाबाद में I grew up in Ahmedabad, so मेरी schooling, college वगैरह सब अहमदाबाद में हुआ करती थी. तो then I was in a convent school, तो यहाँ पे second language हिंदी हुआ करता था. So one had to मतलब हिंदी लिखाई पढ़ाई was compulsory था, and plus if you are in Ahmedabad तो गुजराती तो एक मतलब that is one must that you need to learn. तो गुजराती हिंदी, you know, they're pretty close. मतलब एक in terms of language, dialects and all, more or less मतलब जिसको हिंदी आती है उसको गुजराती तो आ ही जाती है, और vice versa as well. So तो ये this growing up in Ahmedabad probably is the reason why कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, and जितने फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर हिंदी में, स्कूल में भी या कॉलेज में भी हिंदी में ज्यादा बात होती थी. तो हिंदी was a natural thing for me as well. Okay. So probably that is why. But at home there was always my mother tongue. So with parents you always spoke in your mother tongue. मतलब यही मलयालम जो है मेरी mother tongue, उसमें बात करते हैं. लेकिन घर के बाहर it was always about languages that you know you learn outside. So that probably is the reason कि मैं हिंदी भी, you know, so you are telling कि आप हिंदी जानते हो and Malayalam is your language. Gujarati you talk because you are in Gujarat. English is like obvious. English is there. 4 languages. और कौन सा Bangalore में हो now? You must knowing the. Yeah, I can speak कन्नड़ा भी बात कर सकता हूँ, and okay, 5 understanding होता है. And plus मैं 2 साल I was in Africa, so we had to learn Kiswahili as well. क्योंकि यहाँ though English was the business language and Gujarati also was, because there are a lot of Gujaratis there, but with your drivers, your maids, your cooks and all, you normally converse. If you know Kiswahili तो अच्छा रहता है. तो उस टाइम पे Kiswahili का थोड़ा बहुत you know वो भी सीख ली थी. But if you are in मतलब जैसे अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में कन्नड़ा तो है ही, लेकिन it's quite fluid in the sense कि बैंगलोर में Tamil is accepted, even Telugu is accepted. तो ये मतलब people are pretty open to languages, मतलब especially in Bangalore. So तो ऐसा है कि say if you know Malayalam and you understand Kannada or at least speak some of it Kannada, then Tamil becomes very natural. So Tamil भी थोड़ा बहुत तो we can understand and we can speak. If you know Malayalam, मतलब वो Tamil भी बहुत easy रहता है कन्वर्स करने का. एंड प्लस सिंस मैं जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद में था तो गुजराती तो मैं बोल ही लेता हूँ, तो उसकी वजह से जो उसके आजू बाजू में जो जितने लैंग्वेजेस थी, जैसे मराठी है, तो इफ समबडी जो और कोई जैसे मराठी में बात करता है तो एटलीस्ट समझ में तो आता है कि क्या बात कर रहे हैं. मे बी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं लेकिन समझ तो जाते हैं. जैसे एंड आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम राजस्थान एज वेल, तो मतलब मारवाड़ी या राजस्थानी जो कहते हैं हम, वो भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं. एंड देन ड्यूरिंग माय वर्क टाइम आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली यहाँ पे पंजाब, हरियाणा वगैरह, तो वो पंजाबी भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं. तो यू नो सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ओपन हो लैंग्वेजेस के लिए. तो यही है कि एडवांटेज बहुत है. इफ यू नो मोर लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली ये तरह की मतलब यू गेट मोर फेमिलियर विद दैट कल्चर, और यू नो एक क्लोजनेस आ जाता है. जैसे आप किसी को मिलोगे वो साइड से या वो स्टेट से, तो आपका एक क्लोजनेस आता है. जैसे अहमदाबाद में भी आज, जैसे बैंगलोर में भी आज मैं जैसे कोई गुजराती को मिलता हूँ, तो यू नो दैट कल्चर, दैट क्लोजनेस कम्स इन. जैसे
कोई तमिल में बात करता है तो उसके साथ में भी, so it helps you to open up your mind and probably helps you to understand them and converse them better. Comfort factor बहुत बढ़ता है. ट्रू. मैंने भी बहुत ट्रेवल किया हुआ है एंड या इट हेल्प्स एक्चुअली. बट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, जो समझने वाला लैंग्वेज हटा देते हैं. A lot. Okay, question change. Okay, so अगर स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप इज लाइक मतलब स्टार्टअप इन द सेंस बेसिकली डूइंग योर ओन वर्क बात करते हैं. तो जब लाइफ मतलब जो भी स्टार्टअप की बात करता बोलता है कि आप अपना काम तब शुरू करो जब आपके पास एज हो या फिर बहुत कम एज में आप शुरू करना चाहिए. You started your own work at the age where you have achieved, मतलब जो सभी टॉप कंपनी में आप काम करने के बाद से अपना शुरू किया. Why? Interesting question. ये है कि that once you had the experience and then you always wanted to work for yourself. मतलब जितना effort आप लगा रहे हो उस कंपनी में या the time that you spend, somewhere along the road आपको ये लगता है कि maybe ये जो एक्सपीरियंस मैंने जो इतने साल का लिया है तो व्हाई नॉट वर्क फॉर योरसेल्फ. मतलब अपने लिए क्यों नहीं काम करते हो, तो मे बी इट विल वर्क आउट बेटर. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थॉट मे बी इफ आई डू समथिंग ऑन माय ओन, जैसे कि मैं मेरा खुद का अगर कुछ करता हूँ यही फील्ड में, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर बेटर, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है काफी वाइड रहा है. So I will be able to deliver what the client expects, and also you feel that maybe it's time that you work at your own pace, or probably you want to be your own boss. मतलब ये एक इस तरह से मतलब एक 20 साल 25 साल मतलब once you cross that 20 years हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि मे बी ये सेम एफर्ट मैं अगर खुद के लिए करूं तो शायद you will be more it will more bring you more happiness and fulfillment. मतलब ये इस तरह का एक माइंड में चलता है कि let me do something on my own. And plus ये एक ऐसा भी है कि if you are in a city, जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर तो कहते हैं स्टार्टअप का हब है. So when you are in a place, that also kind of influences you a lot. The environment around you also influences. So these are some of the factors that really said that maybe I should do something on my own. So probably that was also the reason why I thought maybe I should do something on my own, and that's how I started to get into this business on my own. And you have I mean consulted many startups or many companies actually. What is the common factor of growth? Like अगर कोई एक चीज जो सारी कंपनियों को ग्रो कराने में इम्पोर्टेंट आपको फैक्टर लगा, एक या दो या तीन जो भी, जो सारी स्टार्टअप्स को या फिर सारी बड़ी कंपनियों को इस पे ध्यान देनी चाहिए, क्या चीज है? Here it's a quite a easy question, but has a very difficult answer. So it is not कि एक size fits all. तो मतलब स्टार्टअप हो है, it all depends कि आप कौन से कैटेगरी में हो और आपके मार्केट क्या है और आपके जो पर्पस है, जो आपका कंपनी का या ब्रांड का या प्रोडक्ट का, वो मार्केट के साथ कितना अलाइंड है. या जैसे कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है और वो मार्केट में एकदम नया है, मतलब पूरी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हाउ डू यू प्रमोट दैट एंड हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड. सो देयर आर मतलब बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें टू ग्रो. सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि एम्फेसिस ये है कि ऑब्वियसली आपके पास एक प्रोडक्ट या एक सर्विस होना चाहिए जो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मार्केट इज ऑफरिंग. तो either the way it is being delivered to you, जैसे हमने देखा है कि now the latest ones is that we can deliver groceries in 10 minutes. Everyone was talking about half an hour. 30 minutes का तो हमने पहले सुना खाली Domino's 30 minutes में deliver करता था. तो that is what we have in mind. But look at that, increasingly मतलब अभी delivery के ऊपर ज्यादा focus हो गया है. If you look at some of the startups that are delivering, they're delivering in 10 minutes. So now the challenge is all about 10 minutes. So ये एक delivery focused हो गया. And there are some products and services that are
that were never thought of, मतलब कभी पास में उन्होंने सोचा नहीं कि ये एक एग्रीगेटर हो सकता है इसके, जैसे अर्बन कंपनी है, जैसे द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, जो इट वाज देयर, इट वाज फेयरली अनऑर्गेनाइज्ड था, मतलब you know, so there obviously there is a friction in the market, और ये कंपनी आके कह रहे हैं कि look, here is something that professionally we can give you in terms of services, and these will be delivered to you as we promise, you know. So मतलब depending on the startups, there is no one single formula कि ये क्या formula है जिससे हम grow कर सकते हैं. तो it is also about circumstances, also about sometimes हमने ये देखा है कि concept में तो बहुत that concept has been accepted on, बहुत अच्छा concept है, लेकिन वो फिर शायद वो execution में आगे नहीं जाता है, you know, या some of them are very weak in the concept level, but वो execution में बहुत powerful है. You know, so ऐसा एक single formula नहीं है कि जहाँ पे you know startup can grow, but my experience by and large has been that ये it all depends on आपका objective क्या है, you know. So the objective of a startup is what? Are you in for creating a dissonance in the market and probably establishing yourself and providing a better service? तो मतलब आप जो existing है उससे better करना चाहते हो? Do you want to change lives of people, make it better? मतलब क्या है objective? Depending on that, I think companies or brands have gone about doing their things. तो ये एक तरह से ऐसा है कि if you have a particular insight that you think you can work, best is to see how you can go to the market first, you know. So and today you see increasingly there are more and more brands that are directly going to the consumer, जैसे D2C जो हम कहते हैं. So in that entire startup ecosystem, it is well developed now. जैसे इंडिया में वो पूरा ecosystem बहुत अच्छी तरह से develop हुआ है, in making sure that you are able to reach the consumers directly, be it through delivery systems, through technology that is available to track your customers, या products that are available that you can source them faster, warehousing, मतलब logistics, you know, the entire जो supply chain वगैरह जो है. And also it's not only about the product, it's also about how do you outreach them. जैसे digital channels are available today which can take your story faster. So मतलब it's not important that you have to have physically be present in all the cities that you want to sell. तो मतलब इस तरह से if you are able to get everything together at one place, you can reach out to multiple cities, जैसे across the country. So there is no fixed formula as such, but only thing is your persistence and perseverance in getting this done. So जैसे how committed you are to get this business up and rolling, you know. So that is what drives the success really, and it's also about the founder, how he sees things. So it's in many of the cases हमने देखा है कि founder is either over ambitious or he's in the game of only valuation, कि ये जो ecosystem में आता है यही लेके कि I will start this company in 1 year time, I will bring valuation and sell it and move on and do it. So मतलब there are people who've been successful, but most of the cases have failed where they have not looked at it from a long term perspective. So ये depends कि आप कैसे देखना चाहते हो. So key elements to all this is probably the concept, the market, the way the market is structured for you, and also how fast you are able to deliver that to the customer, and how you are able to fulfill that and continuously see how the customer is being loyal with you in terms of you know, ordering more and more of your products or your services. So this is what drives companies to be successful in this entire startup environment. Basically, in short terms, depending upon the mindset of the mindset of the founder, and how persistence he is to reach the goal and what his goal is. Yes. Okay. So when it comes to like a different question, like you are a brand strategist, okay, how much branding is important for the start? Yeah, it's one of, I think अभी what हमने देखा है कि ज़्यादातर startups ये they are more into numbers game, मतलब कि ये कैसे sell करते हैं, how do you bring in volumes. तो इसमें in this entire race में क्या होता है कि branding जो key element होता है इन सब में,
तो ये हमने देखा है कि ज्यादातर इसको इग्नोर करते हैं लोग, स्पेशली फाउंडर्स, दैट दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज डेवलप इट लेटर, यू नो, बट इट्स लाइक इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे जब when a child is born, जैसे बच्चा born होता है, तो one of the first things that we do is to give it a name, right? And that becomes the branding for that child throughout his life. तो imagine a scenario कि जब बच्चा होता है और आप नाम नहीं डालते हो, तो क्या होगा उसके साथ में? तो you will send him to school, you will send him, he will have everything, but people will not be able to relate to him, you know? तो मतलब क्या, किस तरह से उसको बुलाएं, you know? And what that name embodies in it. You know, for instance, similar to brand, जैसे आप नाम कहते हो, जैसे अम्बेश, if I call you Ambesh, so Ambesh represents for certain qualities. मतलब I know Ambesh wants everyone to know him as a sincere, honest person. मतलब ये, these are the brand speaking for himself, right? So similarly, brand, it's very important that you have the branding and you create a sense of branding for your product or your services. When you start off, that's the key element. That's the first step that you should be doing. जैसे startup है तो branding is the most important thing. क्योंकि इससे लोग identify कर सकते हैं कि ये what does this brand represent? What are the triggers? What is the positive side of thing? You know, so there are a lot of these brand attributes जैसे कहते हैं that come out and people are able to relate to that. तो ये एक emotion होता है जो people are able to relate to that brand. So आप जैसे कोई भी brand ले लें, जैसे आप Sony as a brand ले लो. Yeah, you take a brand like let's say Apple, yeah, so it gives you certain imageries, you know, कि ये Apple मतलब क्या, एक easy to use technology company, very high on design, मतलब these are some of the attributes that come out. How is that possible? ये सारा ये है कि Apple ने बहुत इन्वेस्ट किया उनके ब्रांडिंग के ऊपर, एंड प्रॉब्ली ये रीजन है कि आज लोग Apple को एक आइडेंटिटी दे चुके हैं और दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद एनीथिंग दैट एप्पल ब्रिंग्स आउट. मतलब आज एप्पल कल टुमारो मान लो अगर कार, ऑटोनोमस कार लॉन्च करता है, तो ये सेम जो ब्रांड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एप्पल कार में भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनको कहा है कि एप्पल स्टैंड फॉर दीज थिंग्स, राइट? तो ये मतलब व्हेन दे गो ऑन एक्सटेंडिंग देयर ब्रांड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you give an identity to the brand, and the brand attributes are enabled in that entire brand, you know, so that speaks for itself, so that half the job is done with that, you know. फिर तो रही बात कि आप इसको कस्टमर्स के पास ले जाओ और you know you try and sell the products, तो उस before you sell it, already the customer knows what the brand is, or at least he is aware of what the brand stands for, and therefore he'll relate to it, you know. तो इस तरह से it's very important that you give it a identity so that you are able to piggy ride on the success of that brand. Yeah. True. Actually, from the brand perspective, I also have the same thought कि पहले मार्केट में एंट्री करके आपको मार्केट में एक ट्रस्ट बनाना है, उसके बाद नंबर गेम पे जाना है, so that कि you can increase your numbers and everything. Yes. क्योंकि if people don't know what exactly your values are, then it's really tough to scale your business. Yes. Okay. So coming to, I mean, like last part of the podcast. Okay. My question is very simple. आपने like 20 years of experience, especially 25 years of experience अब तो हो गया, but 20 years of experience के बाद से आपने एक बिजनेस शुरू किया, और अभी मैक्सिमम लोग मतलब जो बहुत कम एज में बिजनेस शुरू कर रहे हैं. So what are the differences and what you suggest to them? To the people who start the business, मतलब youngsters? हाँ, जो youngsters जो मतलब बिना एक्सपीरियंस के ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं, without having a single experience, और जो लोग मतलब लाइक जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके समय जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक्सपीरियंस है, तो व्हाट इज द बेनिफिट यू हैव, और जो स्टार्ट में कर रहे हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द डिमेरिट्स, होता है ना, मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ एवरीथिंग. तो दोनों को अगर आप कंपेयर कर पाए तो ये आई थिंक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस टू स्टार्ट बिजनेस. मतलब ये तो एक सिंपल सा है कि एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, बट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इट हेल्प्स यू, आपका जो डिसीजन मेकिंग है या आपका जो एक सर्टेन सेंस ऑफ मैच्योरिटी है वो आ सकता है. बट आई एम सेइंग दैट that is not the only reason why you would succeed.
बट जैसे कि इफ यू स्टार्टिंग समथिंग, आई थिंक मेरा ये मानना है कि यू नीड टू हैव अ मेंटर विद यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके जो सीनियर्स हैं या ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं आपके सर्कल के, आपके कनेक्ट में, एंड यू नो सिंपल थिंग, आप जैसे लिंक्डइन ले ले, अगर आप लिंक्डइन में हैं तो यू अप्रोच, इफ यू गेटिंग इनटू अ बिजनेस, और आप जैसे कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस वर्टिकल में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो यू लुक आउट लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क पे, आप देखें कि कौन लोग हैं ये पर्टिकुलर वर्टिकल में जो 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 थॉट लीडर्स हैं या जो लीडर्स हैं ये इंडस्ट्री में, एंड यू जस्ट मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट टू देम। एंड इन टुडेज डे एंड एज सारे ओपन हैं, जैसे एवरीवन इज ओपन टू मेंटरिंग। आई डोंट थिंक एनीवन विल हैव any barriers in such. So to give you my example, today I mentor a lot of startups, and I just do it pro bono. मतलब ये इतने साल का एक्सपीरियंस जो है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट somebody else benefits from this experience that I have gained. So be it go to market, या be it branding, या be it communication, messaging, या brand strategy, जो भी है. So it's very important that, you know, when you have a certain amount of experience, you just don't go down with it. मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपके पास ही रखें, तो उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है किसी को। अगर आप 20-25 साल से काम कर रहे हैं एंड यू हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस है, तो बेस्ट दैट यू सी इज टू एक्चुअली शेयर इट विद पीपल हु रियली नीड इट। जैसे आज इन टुडेज डे एंड एज वी आर सीइंग दैट कि इंक्रीजिंगली स्टार्टअप्स हैं जो एवरी पर्सन हु इज कमिंग आउट ऑफ कॉलेज ड्रीम्स ऑफ कि आज मैं मेरा खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं। तो फॉर देम योर एक्सपीरियंस कैन हेल्प हिम अ लॉट। जैसे उसको अगर 5 साल लगता है उसको एक तरह से क्या कहते हैं पानी से बाहर आने के लिए, तो विथ योर एडवाइस और विथ योर एक्सपीरियंस इफ यू आर एबल टू शेयर विथ हिम, तो हो सकता है कि वो 5 साल का शायद 2 साल में हो सकता है। एंड व्हेन यू सी जैसे आपका एक्सपीरियंस अगर आप किसी को दे रहे हैं एंड देन ही इज एक्चुअली लुकिंग एट इट एंड सीरियसली टेकिंग इट, और वो जो सक्सेसफुल होता है, तो उसका सक्सेस जो है वो जो आप जैसे बाहर से देखते हो, तो यू फील वेरी हैप्पी दैट यू नो हियर इज समबडी हु आई गिव हिम एडवाइस एंड ही इज टेकिंग इट एंड मूविंग विद इट, यू नो। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फिलॉसफी दैट आई हैव, दैट यू नो कि आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास ना रखें, आप शेयर करें लोगों के साथ में। इट डजंट मैटर कि आपको एवरीवन हैज टू पे यू फॉर द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, नो, नॉट एट ऑल। आई मीन देयर इज सम बिजनेस लाइन्स दैट यू हैव, यू कंटिन्यू विद दैट, but for people you keep yourself open ki for instance as of now I'm at least a mentor to about 4 startups, और ये various stages में है, you know. And once in a while when I come across something interesting, I share with them, I tell them this is how you should be doing it, you know. This is all and all of them appreciate that, and they write back to me saying okay, thank you so much, but do you think we can get into a call, और ये आप बता सकते हैं इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं? Happy to get into it. और throughout this never ever come across कि अच्छा इसके पैसे कितने लगेंगे, या you know how do I charge you? Never. I mean that thought doesn't come in. The fact that they're seeking out, मतलब आपके पास आ रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं, that itself is a very satisfying experience, you know. तो ये एक and that is also one of the reasons why today मतलब आज I also teach online at upgrad, और यहाँ पे MBA students जो हैं वो they are all there, so I also teach them on strategy, leadership, you know, marketing courses I take. So ये इस तरह से it gives me so much of satisfaction that at the end of it, after learning all this while you are able to give back to the people who really need to know from an experienced person कि क्या हो सकता है, what could be the real challenges इंडस्ट्री में, या आप जैसे मार्केटिंग में हो या आपका खुद का बिजनेस हो, तो आप क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो नोइंग इट इज ऑलवेज बेटर। और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो यू नो वो बहुत वैल्यूएबल है, रादर देन रीडिंग बिग ऑथर्स। और वो कहते हैं कि हर एक का सिचुएशन और एडवाइजिंग लेवल अलग होता है, तो somebody who you know or you relate to और एडवाइस देता है, तो you tend to take it थोड़ा बहुत सीरियसली ले लेते हो, और आप it really helps you, you know? So that's been one of my satisfying moments, if I say, in all these years. Even I can tell you the same कि मैंने भी एक startup, although I don't have that much of experience like you,
बट मैंने भी एक स्टार्टअप एसएल नाम से एक मतलब बेसिकली इट्स ए कम्युनिटी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, तो लाइक मेरे लीगल फ्रेंड्स हैं, बिकॉज मेरी भी स्टार्टअप है तो मुझे लीगल हेल्प चाहिए होता है, तो आई कनेक्ट विद देम। और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लीगल, फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक, ये जो 4 फंक्शंस हैं बेसिकली, वो चारों फंक्शन पे अगर किसी को कुछ मेंटरशिप की जरूरत है या सपोर्ट की जरूरत है तो वो एक दूसरे को हेल्प करता है। एक मैं प्लेटफॉर्म की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी लाइक, मेरा जो पहला मोटो यही है कि दैट विल बी फ्री, बट लेट्स सी कि अभी आगे कहाँ तक जाता है। बट या द पर्पस आई एम प्लानिंग कि एक सेटिस्फेक्शन मिले, because we are doing a lot, but if we are doing something for free or some beneficial for the market, तो एक अच्छा लगता है, एक अच्छा फील आता है हमें। Absolutely. And it's great talking with you, and we learn a lot from you, especially जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी वाली बात होती है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं कि अगर मैंने स्टार्टअप कर दिया तो मैं दोबारा जॉब में नहीं जाना चाहूंगा। लाइक नथिंग इज दिस, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप जॉब में जाओ, दोबारा आप वापस आ सकते हैं। अगर आप जॉब में हो तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ के आप वो नहीं कर सकते हो, कभी लेट नहीं है और कभी फर्स्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। Thank you so much for having me.